Hello class 10th. In today's session we will sum up chapter number 17, measure of central tendency. So let's start. In this chapter we will discuss three main topics. First, arithmetic mean, which is also called average. Second, median, and third, mode. Let's start. First topic, arithmetic mean. In arithmetic mean, type 1 for ungrouped datas. In this type we will find arithmetic mean by following formula. Arithmetic mean equal to sum of data upon number of data. In mathematics form, if values of varieties are x1, x2 and up to xn, then arithmetic mean x bar equal to x1 plus x2 plus up to xn upon n, which we will represent sum of values are sigma xi upon n. Then next, second type for ungrouped frequency distribution. In this type of distribution we will use formula arithmetic mean x bar equal to sigma fi xi upon sigma fi. And third type for group frequency distribution, it is a very important distribution. In this type of distribution we will use three methods: direct method, assume mean method, and third, step deviation method. First method, direct method. In this method, formula is used to find arithmetic mean is x bar equal to sigma fi xi upon sigma fi. Next, second method is assume mean method. In this method, formula is used x bar equal to a plus sigma fi di upon n, where n equal to sigma fi, where a equal to assume mean, a is called assume mean, and di is also found by xi minus a. And third, last method is step deviation method. In this method, formula is x bar equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h, where ui equal to xi minus a upon h and h equal to class size. Okay, next second topic is median. And in this topic, first type for ungrouped datas. For ungrouped datas, median is found by the following working steps. First step is arranging the n values of varieties by ascending or descending order. सबसे फर्स्ट अपन जो भी वैल्यूज गिवन है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. एंड देन नेक्स्ट सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n, if n is odd number, then median equal to n plus 1 upon 2 term is median. And if number of term n is even, then median equal to mean of the n upon 2 and n upon 2 plus 1th term is median. Okay, next second type for ungrouped frequency distribution. In this type working steps are, first step is preparation of CF टेबल. सबसे फर्स्ट हम CF टेबल को प्रिपेयर करेंगे. देन सेकंड स्टेप में अपन n अपॉन 2 का वैल्यू फाइंड आउट करके थर्ड स्टेप में अपन फाइंड द वैल्यू ऑफ CF जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू n अपॉन 2, विच इज द मीडियन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Next, third type is for group frequency distribution. For group frequency distribution, working steps are: step 1 is to prepare the CF table. Second step is, after calculating n upon 2,
find the class interval of CF just greater than 8, which is called median class. Okay. Third step is now to find the median for this class interval with the help of this formula, median m equal to L plus n upon 2 minus C upon Fi into H, where L equal to lower limit of median class, n equal to total frequency sigma f, C is CF of class preceding the median class, H equal to interval of the median class, and F is frequency of median class. And then next, third last topic is mode. In this mode, first type is for ungrouped datas. From this series we first prepare frequency distribution. सबसे पहले हम उस डेटास का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन बनाएंगे, एंड द वैल्यू विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड. उसमें अपन चेक करेंगे जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वो अपना x का वैल्यू मोड होता है. एंड नेक्स्ट फॉर सेकंड टाइप फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हियर इन रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन the value whose frequency is maximum, the value of that term is mode. उसमें भी अपन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे और वो अपना जो वैल्यू होगा वो अपना मोड होता है. लास्ट जो इम्पोर्टेंट थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जो वर्किंग स्टेप्स रहेगी, फर्स्ट स्टेप्स इसमें सबसे फर्स्ट अपन मोड क्लास इंटरवल फाइंड आउट करते हैं. द क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मॉडल क्लास इंटरवल या मोड क्लास इंटरवल. ओके. नेक्स्ट सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू मॉडल क्लास इंटरवल वी विल यूज following formula to find mode. Mode equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h, where L equal to lower limit of model class, f1 equal to frequency of model class, f0 equal to frequency of the class interval just preceding the model class interval, and f2 equal to frequency of the class interval just after the model class interval, and h equal to width of the model class. Okay, thank you very much.